हे व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू? माय सेल्फ राहुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई होप आपको ये एडिटिंग बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। एंड चलो पहले इससे कॉल स्टार्ट करते हैं एंड देन मैं दिखाता हूँ। 2000 years later. सो बाइक हो चुकी है वार्म अप, तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। Let me give some throttle. Second test I'm gonna be using this cup, the seat, because राइडर को सीट में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होता है रॉयल एनफील्ड बाइक्स में। एंड लुक एट इट। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो एंड घंटा बजा देना। एंड गाइस, बाइक कोई सा भी ले लो, चाहे वो 100 सीसी का हो या 1000 सीसी का हो, वाइब्रेशन तो होना ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा बाइक चला रहे हो। चाहे वो BS4 का हो या BS6 का हो, पहले से ज्यादा वाइब्रेशन है नहीं। एंड BS4 एंड BS6 में जो डिफरेंस है वो आप अगर चलाओगे तो आपको फील भी नहीं होगी, इतनी कम वाइब्रेशन है इस बाइक में। एंड ऑलमोस्ट सेम बाइक्स है, पहले भी वो फ्यूल इंजेक्टेड थी, अभी भी वो फ्यूल इंजेक्टेड है, बस नॉर्म्स जो है वो चेंज हो गए हैं और कुछ ज्यादा खास है नहीं डिफरेंस। सो गाइज, आज के लिए इतने रखता हूँ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।